अस्सलाम वालेकुम बांग्लादेश। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त मोहम्मद उमर। आप देख रहे हैं एक ज़बरदस्त चैनल नोबी रिएक्शन। तो उम्मीद है यार बांग्लादेश के तमाम सिंगल मिंगल लोग ठीक होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है जियोग्राफी नाउ। यार मैंने बांग्लादेश पे काफ़ी वीडियोस पर रिएक्शन दिया, लेकिन मैंने बोला कि बांग्लादेश काफ़ी प्यारा है, ये है वे है, लेकिन मुझे नहीं पता कि बांग्लादेश कितना, उसकी जियोग्राफी क्या है, उसके मतलब ईस्ट पे कौन है, वेस्ट पे कौन है, किधर पानी मतलब दरिया लगता है, किधर ज़मीन है। तो कोई जियोग्राफी का कोई आइडिया नहीं। मोस्टली मेरे ख्याल से 90% पाकिस्तान को, जो एक बांग्लादेश एक पार्ट होता था पाकिस्तान का, तो उनको इस बारे में कुछ पता नहीं है। आज हम देखेंगे यूनिक टोपोग्राफी एंड जियोग्राफी ऑफ बांग्लादेश। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, साथ बेल आइकन होगा वो भी प्रेस कर देना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर आप उनके चैनल को लाजमी चेकआउट करना और ओरिजिनल वीडियो भी वहां से लाजमी देखना और उनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं अमेजिंग वीडियो आज की। Here we go. Oh, sorry. I'm just headbanging. To Bangladesh! Okay, गिर गया। It's time to learn geography Now! Hey peeps, I'm your host Paul Barbado. Insert intro thing because I didn't write anything. Let's dissect the flag. Intro. Now, you've probably seen this flag before and thought, who dipped the flag of Japan in a tub of algae? Well, it's not some green mutated version of Japan's flag, it's Bangladesh's. Essentially, the flag has a green Similar है ना, red लेकिन circle color that is difference है। not in the center, but a little bit offset closer to the Okay. west side. And the reason for this is so that it looks centered when the flag is waving in the air. Green represents the lush, fertile green interior of the land of Bangladesh, and the red represents the sun. Simple! Moving on. Now, this is going to be really fun because Bangladesh has some of the most confusing territories on the planet. First of all, the country is located in Asia, east of India, and almost completely surrounded by India, including that narrow little Siliguri corridor, or the chicken's neck of India, a small but reasonably sized border with Myanmar in the southeast, and the Bay of Bengal located to the south. The capital and largest city is Dhaka, located in the lower central region right above the Padma River and the Ganges Delta. Now, here at Geography Now, one thing we love are enclaves and exclaves because they are delightfully confusing. And it is with great honor that I present to you the country with the second most enclaves in the entire world, Bangladesh, right after India. When you hit the north of Bangladesh in the Rangpur region, all hell breaks loose and suddenly you see this huge mess of territories that are sprinkled around the entire border, owned and marked by each side. It gets especially messy when you go to the north of the Tista River by the Bengali town of Petgram and see a smorgasbord of over 60 enclaves and exclaves scattered in a weird random order that makes no sense. Many of these enclaves are first order and second order enclaves, that's enclaves inside of enclaves, and the world's only third order enclave, Dahala Kagrabari 51. A small crop field barely the size of 2 acres. This land is a piece of India within Bangladesh within India within Bangladesh. Talk about inception or landception. The Halakagrabari 51 is actually owned by a Bengali farmer who lives on the Bengali side, even though the land kind of belongs to India. Most of these enclaves are farmlands that were owned by families mixed in with the area long before the borders were drawn up by the British, which is why some areas don't relent their property to the other country. The Indian and Bangladeshi governments have announced their intentions to resolve the issue by swapping 162 enclaves by giving residents a choice of nationality. However, the process isn't really moving and is kind of stuck in a red tape limbo. As we'll soon find out, Bangladesh's land is shaped heavily by the landscape and immense river systems that flow through the entire country like vital bloodstreams, fostering life to the entire region. And by soon, I mean like right now. Last time we learned about Bahrain and found out that some countries have a problem getting water. Well, Bangladesh kind of has the complete opposite problem, and they have too much water. One thing you have to understand is that Bangladesh's largest resource is their rivers. In fact, the Bengal Delta is the largest delta in the world, and the country has more trans-boundary rivers than anywhere else at 58. This means that they share rivers with both India and Myanmar. Altogether, though, Bangladesh has about 700 main rivers, the largest ones being the Padma, or better known as पाकिस्तान में टोटल 5 है मेन रिवर्स, the Jamuna or the Brahmaputra. मतलब 6 गुजरते हैं जिसमें से 3 पाकिस्तान के 3 इंडिया के। 700 मेन। ओ भाई, Bangladesh is an ecological gem. In fact, some of the most fertile soil in the world is found in Bangladesh, allowing them to grow thousands upon thousands of different crops, plants, and orchards. One thing they're especially known for growing is jute.
I actually had no idea what jute was prior to making this video, and then I found out it's actually the stuff they use to make ropes and burlap. Okay. See? I'm just like one of you. I'm learning. मुझे भी नहीं Bangladesh is पता। generally split up into two different separate regions. The low-lying flat delta, where most of the land is only at 10 meters or less above sea level, and the small hilly plains mostly in the north, northeast, and southeast by Okay. Chittagong. Speaking of Chittagong, Bangladesh has the world's longest uninterrupted beach in the world. Cox's Bazar. This place goes on and on for 75-ish miles. However, Bengalis would kind of prefer if you didn't check out the north part by Batiari, because it kind of looks a little trashy. It's a huge ship graveyard where companies all Oh. over the world like to dispose of their old ships, where the people of the region can break apart and salvage the pieces for profit. Now, Bangladesh is, of course, blessed with fertility. Often villages are buried underneath mango and coconut and jackfruit trees, and beautiful forests with an abundance of flora and fauna, such as the Sundarbans, the world's largest mangrove forest, which is Bengal the last tigers. place where you can find the Bengali tiger. However, there is a problem. Bangladesh is kind of subject to terrible, terrible tropical storms almost every Oh. year, and sometimes even tornadoes. On top of that, during annual monsoon season, the rivers get so swollen that 2/3 of Bangladesh's 64 districts typically experience Oh. flooding that causes extensive property damage, loss of communications, loss of drinking water, loss of crops, and leads to the spread of disease, which eventually leads to death. It's kind of crazy though, because for such an environmentally rich area, the country has to deal with almost equally damaging environmental challenges. Now, add on ये top of चीज that का the मुझे fact नहीं that पता था कि Bangladesh इतनी is a प्रॉब्लम dense होती है। population. Let's talk about that. Culture, demographics. Bangladesh's people have a very unique story in that they kind of had to, how can I put this? They had to fight 2 rounds for 2 separate independences, one of them from the British and the other from Pakistan. In the shortest, simplest way that I can put this without boring you and with cute little motion graphic animations so that you'll pay attention and you might actually learn something, Bangladesh was for a long time part of the British Empire. However, after the British left, they separated the region into 2 states and 3 regions, the predominantly Hindu state being India and the predominantly Muslim state being West Pakistan and East Pakistan, which is now known as modern-day Bangladesh. West Pakistan administered East Pakistan, and the capital of the time was Karachi and was also located in West Pakistan. Despite the fact that both sides were Muslim, they had very little in common both culturally and linguistically. East Pakistan eventually became furious because they felt as though they were being taken over by Pakistan, and especially angry when Pakistan tried to establish and institute Urdu as the official language, and almost nobody spoke it, as everybody there spoke Bengali. Wars, fighting, yada yada. They gained their independence in 1971 and joined the UN. Done. Once again, let me remind you guys, this is geography now, not history now. Now, as mentioned before, Bangladesh is very dense in their population, with a population of about 160 million people. In fact, if you exclude the city-states like Singapore and Hong Kong, although Hong Kong is technically under Chinese sovereignty, Bangladesh is the most densely populated country in the world and the 8th most populous. Okay. The country is predominantly Muslim, and about 86% of the adherents being Sunni or Sufi Muslim, Okay. and about 12% are Hindu, and the remaining 2% are mostly Christian and Buddhists. Now, surprisingly, they all get along with each other pretty well, but let's find out who else Bangladesh gets along with. Friend zone. Now, Bangladesh tries to maintain good ties with pretty much every country in the world and doesn't really typically choose sides when it comes to major world powers. Nepal is like a tactical friend to Bangladesh, and it's mostly based on strategic agreements. Nepal does good business, and Bangladesh gives them access to the ocean. The Maldives likes to hire Bengali people for work, especially with their huge tourism sector. About 40,000 Bengali workers live in the Ooh. Maldives. For Sri Lanka, the first king was said to have ancestors from Bangladesh, and the Bengali Buddhist community has sent Sri Lanka a gift from what are allegedly a few strands of Buddha's hairs and are worshipped objects on Hoya Day, a Buddhist holiday, in Sri Lanka. Now, Myanmar has generally good relations with Bangladesh. However, there's a little controversy over the Rohingya people, a Muslim tribe living in the north part of Myanmar that are being attacked and persecuted by radical extremist Buddhists living in the area. That's right, you heard me. Radical extremist Buddhists. They do exist. Because of this, the Rohingya people have been flocking to Bangladesh as refugees, which has been causing them more and more drama as an already overpopulated and relatively poor country. The US was and still is the largest aid provider for Bangladesh and is one of the top trade partners in textiles. One thing that Bangladesh is like really good at making. I mean, have you seen the tags on the back of your shirts? It might just be from Bangladesh. However, Bangladesh is doing so well at developing their infrastructure that they've decreased their aid dependency from 85% in 1980. Okay, ये काफी एक अच्छी बात है यार. This is good for both countries.
For the UK, yes, Bangladesh was part of the former British Empire, and even though they fought for independence and didn't like the British rule, the British culture still permeated the Bengali culture over the years, and it is very evident even today. I mean, their favorite sport is cricket, they drive on the left side of the road, and English is the second most commonly spoken language. To this day, despite the historical tension, the two countries get along just fine and have strong diplomatic ties. In terms of their best friends, though, they more or less might consider Bhutan and India. Bhutan, they only have 2 embassies in their entire country, one for India and one for Bangladesh. Cool. This is kind of huge, as we will soon find out in a future episode how incredibly isolated Bhutan is. Bhutan was the second country to recognize Bangladesh as a state and has decided they want to invest heavily in the country's business. For India, it's funny because a predominantly Hindu country defended a Muslim country from another Muslim country. They were the first to recognize Bangladesh as a state and supported them in the war against Pakistan. However, afterwards, they kind of got into a few squabbles themselves. Apparently, they didn't realize that after drawing the borders, they had to share like a lot with Bangladesh. Things started popping up like the enclave disputes and the Ganges River irrigation drama, and complaints that too many Bengali people were living illegally in India. However, in the end, they get along pretty well and are always there to support each other. In conclusion, Bangladesh is blessed and cursed in so many ways, yet no matter what gets thrown at them, they always stay afloat when the flood comes, and when it dries up, they're ready to get right back up and plant those crops all over again. Stay tuned, Barbados is coming up next. Hey peeps, just want to तो यार वीडियो का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ये मेरी पुरानी वीडियो है जिसकी मैंने रिव्यू रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अब मुझे मिली है, मैं सोचा इसका रिव्यू रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाए। तो इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को मैंने दोबारा देखा और मेरा रिव्यू यही है कि इसमें इंडिया की मुनाफकत सामने आ गई 2 पॉइंट पे, एक इनक्लेव और एक्सक्लेव वाले मामले पे कि वो इंडिया काफ़ी, मतलब जब ये मामला आया तो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ काफ़ी गुत्थम गुत्था कर दिया, और सेकंड पे जो पाकिस्तान के साथ जो बांग्लादेश की जो टसल थी, वो जो लड़ाई थी, जो पाकिस्तान ने ज़्यादती की थी बांग्लादेश पे, सिविल वॉर हुई थी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, ठीक है। उसमें बताया है इस बंदे पे नहीं, जो कि पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है, एक आउट ऑफ कंट्री है, उसने एक ट्रू रिप्रेजेंट किया कि वो सिर्फ पाकिस्तान की नाकामी के लिए वो बांग्लादेश की हमायत करता है, जो कि मैंने काफ़ी अरसे से बोलता रहा हूँ। बांग्लादेश का वो एक अच्छा दोस्त नहीं है। आई थिंक मैं उसको, अगर आप पाकिस्तान की भी बात छोड़ दें, तो मैं समझता हूँ कि भूटान बांग्लादेश का सबसे अच्छा फ्रेंड है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हो कि भूटान बांग्लादेश का सबसे अच्छा दोस्त है कि नहीं, क्योंकि उसके प्राइम मिनिस्टर भी बांग्लादेश से पढ़ के गई हुई हैं। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर है और उसमें 2 ही एम्बेसी हैं, एक इंडिया की है और एक बांग्लादेश की, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से बांग्लादेश का जो सबसे अच्छा दोस्त है वो भूटान है। ये नहीं कि ट्रेड के मामले कर लो, लेकिन एज अ लॉयल्टी के तौर पे आई थिंक भूटान है बांग्लादेश का सबसे बेस्ट फ्रेंड है। बाकी इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। जब मैं छोटा होता था ना, मैं समझता था बांग्लादेश हमारे से ना बिल्कुल साथ एडजेसेंट है, मतलब बिल्कुल साथ है, तो वो एक टुकड़ा अलहदा हो गया। लेकिन ये नहीं पता था कि पाकिस्तान है, इंडिया, उसके साथ कोई एक सी के साथ एक एरिया है, वहाँ बांग्लादेश बसता है। तो ये मिसकंसेप्शन जब हमने बड़े 9-10 में जाके ये चीज़ पता चली कि बांग्लादेश अलग है, ये लेवल है हमारा। तो मैं बात कर रहा था इसकी जियोग्राफी की, इसको सराउंडिंग इंडिया ने किया हुआ है दोनों साइड से। एक साइड से छोटा सा बॉर्डर है म्यांमार का, और उसके साथ भी काफ़ी मसले रहे हुए हैं, रोहिंग्या के मुस्लिम का मसला, और उन्होंने हिजरत कर ली थी बांग्लादेश की तरफ। यार बांग्लादेश ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया था उनके लिए कैंपिंग, वो सारा सीन अरेंज किया था, और अभी तक आज तक भी वो रह रहे हैं, और बांग्लादेश अपना मुकदमा भी UN में लड़ रहा है कि इनके लिए कुछ किया जाए। और मैं बहुत अच्छा समझता हूँ कि बांग्लादेश इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है, इस इशू पे बांग्लादेश का कोई साथ नहीं देता, और मुझे उम्मीद है कि यार दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ को भी आना चाहिए और बांग्लादेश को भी सपोर्ट करना चाहिए इस मामले में, ताकि जो रोहिंग्या के मुस्लिम हैं उनके साथ जो ज्यादती कर रहा है, दो कि बांग्लादेश को इस चीज़ की एड आती है, लेकिन बांग्लादेश ने अपने सराउंडिंग्स भी और अपने बॉर्डर्स भी देखने पड़ते हैं। उनकी एक प्रॉपर सिक्योरिटीज़ होती है कि वो इधर अपने कंट्री के साथ घुल मिल ना जाएं, फिर कोई दूसरी टेरर एक्टिविटीज़ ना हो जाएं। तो ये सारी फैक्टर्स होते हैं, तो ये एक आप पर एक बोझ भी होते हैं
कि जो दूसरे कंट्रीज आए होते हैं उनका ख्याल भी रखना होती है, प्रोटेक्शन भी करनी होती है। तो एड तो मिलती है लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिलती है और इसको रिजॉल्व भी कर रहा है बांग्लादेश। उनकी 100% नीयत है, लेकिन विल क्या ये बात नहीं सुनी जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? उनका कोई साथ नहीं देता। तो मैं उम्मीद है यार बाकी जो कंट्रीज हैं मुस्लिम कंट्री एटलीस्ट वो ही उनका साथ दे दें। इस वीडियो में मैं काफ़ी शॉक हो गया। 700 रिवर्स हैं पाकिस्तान में, आपको पता है सिर्फ 6 रिवर्स बहते हैं जिसमें से 3 पाकिस्तान के हैं, 3 इंडिया की साइड से आते हैं, लेकिन 700 विन। मैं हैरान हूँ कि बांग्लादेश कैसे ये चीज़ मैनेज करता है। 700 रिवर्स और आए दिन आपको देखा वो कैसे वाटर बॉडीज़ भरी होती हैं, आपको लेक्स पॉन्ड्स देखने को बांग्लादेश में मिलते हैं। तो इसी वजह से है क्योंकि बांग्लादेश में टू मच वाटर है। उसने सही कहा कि कुछ कंट्रीज़ में वाटर नहीं होता और इसमें इतना ज़्यादा है कि वो संभाला नहीं जा रहा। तो लेकिन फिर सलूट है बांग्लादेश को, जैसे वो मैनेजमेंट करते हैं अपनी कंट्री की, तो सलूट वो डिज़र्व करते हैं कि इतना ज़्यादा वाटर होने के बाद भी वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे उनकी इकॉनमी बूम कर रही है। तो लास्ट पर मैं एक चीज़ ज़रूर हाईलाइट करूँगा, वो ये था लैंग्वेज इशू जो वीडियो में हाईलाइट किया, जिसमें मैं 100% डिसएग्री करता हूँ। लैंग्वेज का इशू है था, ये चीज़ मैं मानता हूँ। और जब हम बच्चे थे हमें भी यही बताया गया हुआ, बांग्लादेश और पाकिस्तान का सेपरेशन जो बेसिक वजह यही थी वो लैंग्वेज थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने रिएक्शंस जो हिस्ट्री पढ़ी, रिएक्शंस वीडियोस देखी बांग्लादेश के बारे में, लोगों से पढ़ा, वो वीडियोस देखी, तो मैंने एक पॉडकास्ट भी देखी जिसमें एक अंकल आए थे जो पाकिस्तानी थे, जो बांग्लादेश में काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई, मैं कैसे बचा बांग्लादेश से, और उन्होंने वहाँ एडमिट किया कि हमने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। तो यही चीज़ें मैंने देखी, सुना, फिर मुझे पता चला कि मतलब लैंग्वेज एक सेपरेशन का पार्ट ज़रूर थी, एक वजह थी, लेकिन वो काफ़ी माइनर थी। लेकिन जो कंट्री को जो हाईलाइट किया गया हुआ था, जो अपने पाकिस्तानियों को बताया जाता है, जो पाकिस्तान के लोग बताते हैं अपने बच्चों को, वो यही थी कि लैंग्वेज। लेकिन लैंग्वेज बैरियर नहीं था। पाकिस्तान के लोग थे, उन्होंने जो कोटा सिस्टम थे, जितनी भी बांग्लादेश डिज़र्व करता था, जितनी भी उसकी जो रेशो थी चीज़ों की वो नहीं मिलती थी, ज़्यादती की जाती थी, उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दी जाती थी, फिर उसके बाद उनको गवर्नमेंट पे जो गवर्नमेंट मिली वो भी नहीं दी गई। तो ये सारी ज़्यादती थी जो 1971 में ख़त्म हो गई। तो ये मेरा था पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई ये वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।